Hi guys, I'm Mihir Joshi. Welcome to another episode of the MJ Show, shot at an IIMUN conference. Hi to all the students who are watching us right now, and to everybody watching us on YouTube as well. Listen, I'm super excited about my guest for today. काफी समय पहले, when I was doing, I think my season 5 or 6, can't remember exactly which one, but एक बार मेरे आज के जो गेस्ट है, he's been on the show, and the response that you guys gave him was exactly what I expected it would be, because every time he drops a song on his YouTube channel, the love that he gets, the kind of attention and respect that he gets from all of you, the fans, is absolutely spectacular. We got along really well from the very first day we met, and then we met up a couple of other times at Social Nation and at another event that we were both invited to. And I'm very, very happy to bring back on the show the incredibly talented Dino James. Welcome to the show, Hey, brother. thank you so much. Thank कैसे you. हो? बहुत बढ़िया कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ यार. It's so good to see you again, and it's amazing. See, I expected, मैंने सोचा था कि ये जब लॉकडाउन हुआ ना, there are some people who are going to be like, यार क्या करें इस समय के साथ, and there are some people who are going to absolutely thrive. And if I had to put my Right. money on what would you be doing, I knew that you would be thriving. I mean, you've been busy, you've been working on great new music. अभी एक नया EP रिलीज किया है with 3 songs, and उसके पहले भी Right. I think 2-3 और गाने रिलीज किए during the lockdown. So, before we talk about the EP, before we get into the EP, tell me, how has this entirely different time in everybody's life, ये पूरी दुनिया के लिए एक common time रहा है, how has it been for you? What have you been up to during this lockdown? Lockdown, nothing यार. Actually, initially it was a super shock. हाँ. एक महीना तो लग गया पूरी चीजों को समझने के लिए कि actually हो क्या रहा है. हम्म. I was anxious, I was inquisitive, I was nervous. और सब लोग के समान समझ में नहीं आ रहा था. I was very worried for my parents, हम्म. for friends and all these rumors कि क्या चल रहा है. Uncertainty समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है. लोग क्या क्या बात कर रहे हैं. तो a lot of people actually thought it was a very good space for creative individuals to create, but it was actually not. It was very anxious time, Correct. because it was very uncertain. So Right. शुरुआत के काफी टाइम वैसे चलेगा ये सोचने में कि यार क्या करें. And second, what I realized is actually you are only good na when you are out meeting people, you know, on streets, traveling, having coffee outside. When you're Right. alone in a house, you can't actually create. You Correct. can't. It's not that you got time. क्योंकि मैंने रियलाइज किया कि मेरा दिमाग एकदम स्विच ऑफ हो गया था. Oh, okay. बहुत सारी चीजें या क्योंकि you're worried. Correct, of course. न्यूज चैनल्स में कुछ चल रहा था, बाहर चीजें कुछ और हो रही थी. सो इट वाज अ मिक्स थिंग यार. इट वाज अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग. बट या लाइक आफ्टर 1 2 3 महीने के बाद धीरे धीरे चीजें आना शुरू हो गई. Exactly, and I see that you've got some great new songs. और मैं वही कहने वाला था कि यार अभी मैंने इतना जब तुम्हारी तरफ से इतने गाने सुने हैं, इतने गाने देखे हैं, तो मुझे नहीं लगा था कि इतना समय लगा था तुम्हें. बट इट्स गुड टू नो, I'm happy that you mentioned this, because people need to know the reality. कि उन लोगों को लगता है कि यार ठीक है, चलो क्रिएटिव बंदा है, कितना टाइम फ्री मिल रहा है, तो सब कुछ एकदम हंसी मजाक है. बट if राइट. this is a good message for everybody watching right now, यार आप हम्म. whether you are Dino James, whether you are a student, whether you are a person who has unfortunately not been able to go back to work because of this lockdown, all of us have gone through this. और अगर Dino James को राइट. 2-3 महीने लगे to sort of collect his राइट. thoughts and get his music together, it's perfectly all right if you were worried as well, if you were anxious. अगर तुम 100%. लोगों को डर लग रहा था, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है. देखिए, सबके साथ हुआ है, ये पूरी दुनिया के साथ हुआ है, राइट. because this is an unprecedented time that we are living through. किसी ने ये करेक्ट. सोचा नहीं था ऐसा कुछ होगा, पर हुआ किसी है. ने नहीं. And we've all come out. Hopefully we are now coming out through it, and with the vaccines coming, things are going to look much better going forward. But ab dhyan dete, let's talk Absolutely. a little bit about the music that you did make during this lockdown. So you've got a deal going on right now with Sony Music, because I know you've been releasing your music on your YouTube राइट. channel as well. But मैंने देखा है जो राइट. last ये जो 2-3 the EP and 2 singles before that you put out on the Sony Music राइट. label as well, right? So it started off with Duriya and Right. then Wishlist, and now I've released 3 songs together, one Chemicals Right. and 2 audios with Sony.
So it's been great actually that we have collaborated and it's wonderful. मजा आ रहा है साथ में. So for तीन तीन गाने. everybody who's watching, check this out. There are three singles that he talked about. Duriya, which came out about a Right, year ago. There is Wishlist. We had the three-song EP, which is called Chemicals, which came out, which also is incidentally right. one of the songs on the EP. So Yeah. tell me a little bit about your association with them before we get into the songs. कैसे कैसे शुरू हुआ इनके साथ ये? Nothing like I'm independent too यार. तो काफी सारे लोगों के बीच में people you are always been very selective क्योंकि आपको एक आपकी freedom की आदत होती है. You are not used to Right. working for somebody else or you're not used to any kind of interference. Correct. So Sony is a good deal when they came in. um, बातें करके लगा कि नहीं यार, it's a very easy going deal with Sony. They Right. understand me, they understand hip hop, Right. and they understand every artist. Correct. So it was a smooth sailing. It was not actually very hectic. No special brainstorming for me. Right. So we spoke and we clicked. That's That's it. awesome, man. और ये तीनों Yeah. जो अभी ये जो EP नई EP जो रिलीज हुए which has got 3 songs, उसमें Hmm. एक वीडियो रिलीज हो चुका है. Are you looking Right. at making videos for Chemicals. the हाँ Chemicals रिलीज हो Yeah, चुका है? definitely yes, because I always actually believe that I'm more Visual. wanting to actually do videos. Yeah, Correct. definitely yes. Correct. तो ये पहली बार है जब हर बार मैंने विजुअल ही निकाला है हमेशा, बिल्कुल लेकिन ये बिल्कुल. पहली बार है कि मैंने ऑडियो एक बार करके देखा कि हाँ. ऑडियो, लेट द ऑडियो गो फर्स्ट, लेट पीपल लिसन टू द ऑडियो फर्स्ट एंड Right. देन आई विल कम विद द वीडियो. Right. सो अभी बातचीत चालू है, ब्रेनस्टॉर्मिंग चालू है इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स. एवरीथिंग इज रेडी. इट्स Right. जस्ट दैट आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम टू कम. बिकॉज टू बी ऑनेस्ट विद यू यार, मीर बताऊं क्या, मैं केमिकल, सोन और फीले की नहीं, तीनों गाने मेरे बहुत फेवरेट है. Right. इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा ईपी है, लेकिन जब वीक गाने करते हो आपको, यू काइंड ऑफ नो. बट सुन एंड फीले की नहीं, उफ, यू नो आई सो वांट टू एक्चुअली डू दैट वीडियो, और वो आएंगे 100% वो आएंगे. नहीं कोई शक नहीं है कि तुम वीडियोस बनाओगे because every song that you put out on your YouTube channel with an amazing video, I think audiences have connected with that because तुम ना राइट, एक बहुत honest तरीके से तुम्हारे videos बनाते हो. It's not about राइट, pretending to be somebody else. Like when I see your videos, I feel जो तुमको मैं अभी पहचानता हूँ थोड़े समय से, I've gotten to know you a little राइट, bit. I see a राइट, reflection of the real you in your music राइट. videos as well, and I love that about all of your songs. So मुझे ये भी बताओ, दूरिया, विशलिस्ट और केमिकल्स, तीनों में you've collaborated with this extremely talented young woman. Tell us a little bit about her. How? Kappu, we call her. Yeah, Kaprila name, we Kaprila. call her Kappu. Yeah, so I mean, she's been a part of family, to be honest with you. Nice, Kaprila has been part since Yade. She's with us since Yade. So nice. Kaprila have got amazing vocals. She's part of family. So she's there for the jamming session. She's there on my writing session. She Very was cool. there actually. If you remember Hankoku, that's Kaprila. Oh, nice. Unstoppable, that's Kaprila. Oh, very cool. So Okay. मैं और नीलेश आपस में बोलते थे कि यार डीनो तो कर दे, और अगर वाइब थोड़ी नहीं मिल रही ना, अपन कप्पू को बुला लेंगे, कुछ ना कुछ बैकअप करके सेट कर देगी. No, So and I was just chemicals पे waiting for actually especially. to collaborate with her. Yeah. Right. Even for Duri actually, I was just waiting. Hmm. So Kappu used to tell me कि Dino we will have to do. मैं like yeah Baba we have to do, but there has to be a song now. I can't just bring you on screen. Correct. Unfortunately, she was not there on wishlist because she was traveling and she was in Goa, and we Right. tried our best actually to do that, but it couldn't happen. Right. Lekin she's amazing. Yeah, she's an amazing talent. It's not that she's been a part of family, because that I took her, to be honest with you, Right. because I'm not going to work with any individual just because I know them. To be Absolutely. honest with you, 100% sure of that. and Kaprila is effective. The word that I want to use for Kaprila is there are so many singers, Yeah. and this is the word that I use for every individual. There are people who can sing, the people who can rap, Yeah. people who can do music, Correct. but there are some individuals जिनके अंदर effect होता है. When they say something, it's very effective. So Kaprila is very effective. जब वो गाती है, उसका जो presence है वो बहुत effective है. Right. बहुत सारे, मैं भी कोई पिक्चर परफेक्ट रैपर या सिंगर नहीं हूँ, उसमें भी काफी सारे फ्लॉज है, लेकिन शायद हम दोनों के फ्लॉज जब साथ में आते हैं ना, वो बहुत फ्लॉलेस लगते हैं. So cool. That is really lovely. And I got to tell you, she's got a fantastic presence on screen as well. Yeah, Because again, like you yeah, said, yeah, तुम्हारे गाने हमेशा इतने visual रहे हैं, लोगों को देखने को अच्छा right, लगा है. I think she's got an incredible presence on screen, especially right. Duriya में भी she was amazing. But I think Chemicals especially was something spectacular. I think what she did, Yeah, she's a just dancer too ना, तो डांस I भी can करती make है. that out. She flows, I mean, even the choice of clothes that she's got in that and the movements that are Right, there.
It's just so, I mean, that's Right. the only word. जब मैंने ये गाना देखा, the only word that came Hmm. to me instantly was, wow, this girl is really flowing. From the way she's Yeah. singing to the way she's moving, Yeah. it just felt Yeah. very effortless. And I thought that Yeah. was really, really cool. So my No, she's congratulations brilliant. to She's Kaprila brilliant. as well Yeah. for her fantastic songs with you. पर आगे बढ़ने के पहले भाई अभी इतने गानों के बारे में बात की, we've talked about 5 songs, 3 songs from your EP and 2 songs before that. थोड़ा सा सुनाओ यार, आई नो योर फैंस वुड लव टू हियर अ लिटिल बिट, एक आध वर्स, Hmm. एक आध छोटा सा पार्ट, एटलीस्ट लेट अस लिसन टू समथिंग. Hmm. आई लीव इट टू यू, मैं तो रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ. हम्म, तो सरवर में घर वर में हर पस पस बड़ बड़ में दर दर कब उतर तर दिल जर जर की मर मर के कर बड़ लू हर क्षण में पर्वतता अब कड़ में सर घर में मन सर दे अंदर भर भर दर्द है खंडर जैसे मंजर जैसे खंजर करे पंचर हुए बंजर करूँ संघर्ष सुने हमदर्द यूं तंग कर तेरी अंजर सारे पंजर तेरी संगत मेरी संपत पर संपर्क मेरी हम बट जस्ट वन वर्ड कैन कंफर्ट सुनाने दे या मुझे जाने दे तू मुझे जीने के लाखों बहाने दे उन सारी यादों की अर्थी को कान दे दे तू मुझे था मेरे भले जुटाने दे उन सब अनजाने सी यादें बुढ़ाने दे तू मुझे गाने दे गाने दे गाने दे बीमारियों के दाग ये जाते नहीं सौ दर्द है फिर भी क्यों सौ राहते नहीं डरा 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 केमिकल्स दैट ही हैज बीन यूजिंग Yeah. और देखो देखो, आप सबको अभी मालूम पड़ा कि इट्स नॉट जस्ट स्टूडियो ट्रिकरी, ही डज इट लाइव. आई सी, यू नो व्हाट, जनरली रैपर्स को बोलो बिना म्यूजिक के गाने को, तो सोचना पड़ता है या उनको कि यार कैसे करें, बिकॉज म्यूजिक, द बीट इज व्हाट हेल्प्स नो गेट बट दैट व्हाट आई फ्लो. डू इज मीर क्योंकि जैसे कि हिट में लिट वाला हिट में चिकने लगू जिद में लिखने लगे जिप ये लिप में तेरे जितने कितने लगेगी जैसे सीखने करू चित डेबिट में जाके चिप लगी में देता टिक टिप में तेरी ट्रिक निसिक में व्हेन यू डू ऑल दिस थिंग्स ना सो यू हैव टू बी लिटिल बिट प्रिपेयर्ड बिफोर एक्चुअली गोइंग टू द स्टूडियो Yeah. you have to be even not with just तांडव स्पष्ट नष्कर्ष से ग्रस्त है शख्स सी ध्वस्त पर शस्त्र भी दूंगा कसम गत सी प्लस बोनस भी लूंगा फॉर इनजस्टिस नतमस्तक होकर you'll say बस प्लीज so when you say all these things now it's you can't read it and just deliver it. That is right. It has to be a little bit on your system because it's very different when you write a rhyme Yeah. and you can crack a rhyme. You can come up with schemes. जैसे कि अभी उसमें भी था पीले की नहीं में कि एक स्कीम थी एक्चुअली जिसमें बहुत फंस गया था इवन सुन में if you notice. So the things with the rhyme scheme is that new thing that I've learned in these 3 songs is I'm trying to go a little melodic, but still maintaining that scheme. Correct. Going little melody कि तू सरवर में घरवर में हर पल पस गड़बड़ में पर्वत ताब कण में सर घर में मन सर दे डन डन धर दन धन. So ये एक अलग चीज है जो इंटरनली आई थिंक मैंने डिस्कवर करी है. Nice. So yeah, it's fun, bro. You have to be a little prepared before actually going to the studio. You have to plan it. I plan it though. That is awesome, man. Acha, by the way, is EP pe you have one more fantastic collaboration with another artist who's been a guest on the MJ show. Yeah, Incredibly yeah, talented young woman. I think yeah. she's fantastic for everybody watching. If you guys haven't checked out my episode with Sanah Moidutty, you should go on my Facebook page and check it out. She'd come on my Facebook page when I was shooting at the Facebook office. वहीं पे मैं Dino से भी मिला था. Right, Incredibly talented young woman, and she's right. sung on your second song on the EP, सुन Sun, तुझ which में is ही था मगन में. Oh, she's lovely यार actually. तो सना इज फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी गुड पर्सन है. तो उसका जो right. प्रेजेंस है स्टूडियो में वो Hmm. फैंटास्टिक है. वेरी इजी टू वर्क विद, नॉट टू मच ऑफ इंटरफियरेंस एंड शी हैड हर वे टू डू इट. Hmm. एंड शी sang the song because I knew कि da 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 na. तो थोड़ी हरकतें थी. Correct. कप्पू का जॉनर मोस्ट वेस्टर्न है, थोड़ी फ्लैट सिंगर है, Right. ज्यादा हरकतें लेती नहीं है. सना इज लाइक कंप्लीट रहमान एंड शी Correct. गॉट हर ओन वे टू डू इट. सो व्हेन आई डिड एक्चुअली सुन सना को मैंने पूछा कि सना आई वुड लाइक टू कोलैबोरेट एंड शी इंस्टेंटली सेड यस. Nice. एंड वी हैव डन इट एंड इट टुक हर शी टुक दिस सॉन्ग टू अ डिफरेंट लेवल यार. एक्चुअली बहुत मजा आया. That is बहुत fantastic. मजा आया सुन करके. सुनिंग अगेन it's a beautiful song. It's amazing. I'm so proud and I'm so happy that I've collaborated with these artists and I with producers Nilesh and Saurabh and did songs like this. Amazing. थोड़ा सुना दो. सुन नई नई रातें और नया नया दिन था. ना तो कोई स्ट्रेस थी और ना तो कोई चिंता. ना तो कोई बेड़िया ना तो कोई पिंजरा. बिना काम किए बस पड़े रहते बिंदास. अपनी ही दुनिया थी अपना था किंगडम. यारी अपनी जैसी टिमोन और पुम्बा. दिन रात बिखरी हुई यादों को मैं दिन रात सोया. मैं भूल गया थोड़े लिरिक्स. खोजा मैंने काफी तेरे जैसा नहीं कोई मिल रहा. गाने बजे खुशियों के छुपे छुपे गम में. चाहतों की कमी नहीं पर कुछ लगे कम है. कुछ आने वाला कुछ पुराना चाहूं लम है. कैसे सब बदल गया जाना हूं अचंभे.
मीठे पले छोटे साली सफरिंग लंबे, छोटे के तो जाती नहीं अभी मेरे संग है, दिल मेरा गम है और कलेजा मेरा रम में, आधा हिस्सा जिंदा और आधा पड़ा गम है, सुन बई वे हमें सुन बई वे. So it's long Yeah. rap things. Yeah, That is yeah. awesome, man. You know what? A lot of people, I think now we have come to the point in India where hip hop is becoming, I think, possibly the dominant music form for, especially for a younger audience. So, school students, college students, I see a lot of people wanting to get deeper into hip hop, and it's because of artists like you, because of people who have pioneered the music form in our country. और तुम अभी काफी सालों से hip hop music करते आ रहे हो. So for a lot of young art, your young fans who watch you, people who follow you, तुम क्या कहना चाहोगे? How, what do they need to do, For especially people now wanting to get into rap, for hip people who hop, want to get into hip hop, who want to become rappers? A lot of young people, people watching us right now on YouTube at the IIMUN conference. I think this is a question that everybody has. कि अगर मुझे शुरुआत करनी है, तो what do I need to do? How do I prepare myself to get into the world of hip hop? I think that you have to get proper inspiration, bro. I think that what you have to do is uh, get inspired by movies, get inspired by reading, get inspired by your own life. Yeah, yeah, Don't just get inspired by the glitter part of hip hop, which is very mm, loud, yeah, which is very prominent, which is yeah, very, very prominent. And it's very easy for you to actually, get attracted by the exterior part of hip hop, which right, is very gangster, which is very loud, which is very rich, you huh, know. So, which is very cool, to be honest with you. yeah, But if you actually listen to a lot of hip hop, Eminems and Tupacs and Dre's and every Drake and every whatever hip hop that you like, it's just a small part. It's just the avalanche the and tip of whatever the eye, the the tip of the tip of the iceberg, iceberg. आइसबर्ग. Yeah, 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 उतना ही दिख रहा है जो आपको लग रहा है, लेकिन उसके नीचे पूरा उनका नॉलेज है, उनकी चीजें हैं. सो व्हाट आई सी इज लॉट ऑफ मोनोटोनी व्हेन एक्चुअली पीपल ट्राई टू send me tracks and try and actually, because I think that a lot of things that people, a lot of youngsters got misunderstood by hip hop with self boasting a lot, correct, you know. सो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के लिए हिप हॉप की डेफिनेशन ही कि तू आगे नहीं बढ़ पाएगा, मैं तेरे आगे हूं, तू हमेशा पीछे रहेगा, तेरे को huh, पता नहीं है कितने लेबल्स मेरे पीछे है. huh, मतलब कौन है तेरे पीछे भाई? They don't even know what, so it's sometimes it gets very funny for me because I asked them. मैंने बोला कि ये रियलिटी है, किसी आपके पीछे है कोई? huh, मतलब बोलते नहीं भाई, वो ऐसा कुछ तो नहीं है. तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है तो ऐसा क्यों है गाने में? huh. Why are you saying this? Yeah, Or why are you saying this? either you're putting people down, or you're trying to glorify yourself, which both are not Yeah, necessarily a because good idea. Yeah, Right, because that's not just hip hop. I think that's only the correct, disrespect part of hip hop, where you're correct, trying to challenge somebody to diss them huh, or to come in competition. correct, Apart from that, I think that like I got into hip hop not because I had a group or I'm wanting to get into music. It's just that hmm. I just wanted to talk. So that's probably Express. the reason Yeah, that Meri Puri express and talk, and I so correct, wanted to vent everything out. So right, if you see the kind of topics that I have touched, it's all directly drawn from my life, like Hancock or Kalia or Loser or Yade or Girlfriend or Bhukali for a change. correct, कि मैं सब बन गया हूँ, तुमको लगता है मैं बहुत बड़ी बात हूँ, but I'm not doing what you think I'm doing. correct, These are all fake. These are all YouTube images, all fake. So still, I think that I'm not there. I'm not doing that kind of money. hmm, So like I progressed in life slowly and gradually, my song progressed. So hmm, that's what I want to say this to everyone, that just go within instead of outside, or just get inspired by books or by probably movies or probably you're traveling. I don't know, correct, but don't get inspired by hip hop, which is already happening. So you're gonna be, you correct. know, the same तुम अलग क्या sheep. कर सकते हो? अगर सेम कहानी तुमको भी बतानी है जो हजार लोग बता रहे हैं, तो उसमें कुछ फर्क नहीं है. लाइक यू सेड, विथ यू, I remember we spoke about Hancock, which was a song that you wrote for your dog, right? I mean, Right. that you use real life experiences, things that are happening to you, to express them through hip hop. I mean, that's also the birth of hip hop. The birth of rap music was just that. कि Absolutely, जो absolutely, Mihir, ना यार, नहीं तो uh, मतलब क्या है? करेक्ट, जो उनके लाइफ में जो जब when it began in the West, when it began in America, the whole idea was to express the frustrations, the anguish that the people were feeling, and get it out through music and keep it relatively they wanted to do something different. जो बाकी का चल रहा था उससे कुछ अलग करना था, something where they could express themselves. And I think that's what
was the birth of hip hop. और फिर वहां से जैसे मैंने Yeah. कहा, it's become this whole gangster culture and the women and the clothes and the jewelry. Right. That's one aspect of Right. it, but that's not all there is to Yeah. it. So for all the Yeah. young people out there who are watching, if you've not checked out Dino James's channel, go on YouTube, search his channel, subscribe to it. He's going to reach 5 million subscribers anytime soon. Make sure you're one of them. Listen to all the songs from the first song to the latest song that he's put out. Go on Sony Music India's YouTube channel. Check out the 5 songs that he's put out over there. You'll get an idea of the kind of stuff that you can do with hip hop. And there is so much. Like if you look at Dino's career itself, इतना varied रहा है, इतने अलग-अलग किस्म के गाने, इतने अलग-अलग किस्म के topics लिए है. There's a lot Yeah. to learn from my friend Dino. But Dino, let's talk a little bit about what's up next. अभी ये EP तो release हो चुकी है 2 हफ्ते पहले. Hmm. I'm assuming Hmm. इसके जो 2 बाकी के गाने हैं उसके Hmm. videos तुम बनाओगे. Right. But Right. Right. how excited are you about the fact that things are seemingly getting back to normal, the possibility Hmm. of getting back on the road, performing Hmm. in colleges, performing at various Hmm. venues is going to Hmm. happen? कितने Hmm. उत्सुक हो तुम, कितना चाहते हो कि यार वापस एक बार क्राउड के सामने आओ and you perform for them? Super, me, super duper duper excited, bro. I mean, we've been actually getting lots and lots and offers already, but I'm Nice. just trying to be a little selective. I'm just waiting for some more tracks. Especially my coming 2 tracks are going to be. I'm like counting a lot on my 2 tracks, not Feel Like You Nahi and Sun, but Huh. my original next 2 tracks. I don't want to Nice. reveal any names, but it's the kind of music that again you go back and you experiment and you go back and you experiment, you do something new. So I'm very excited. I don't want to reveal anything, but these 2 songs is going to come now. Probably actually three. I've just finished actually producing my third one, Oh, lovely. which is again in a complete different zone altogether. Uh-huh. So I after this 3 songs, I think I'll take a call कि कहाँ वो set के साथ performances? उतरूँ तो ज्यादा मजा आएगा. हाँ, क्या उसके साथ बात है. उतरूँ तो और ज्यादा मजा आएगा. तो ये तुमने जो अभी यहाँ पे बताया, ये तुमने तुम्हारे सोशल हम्म. मीडिया पे डाला था कि तुम्हारे 3 नए गाने आने वाले हैं? इसके बाद सुन के इस बाद हाँ, सुन के बाद और ये नहीं, जो मैंने अभी ईपी. नहीं बताया. पहली बार बता रहा हूँ भाई आपको. ये देखिए यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ हो चुका है. But देयर it's not a वाज़ but it's not an EP. But it's not an EP. not an EP, but there are 3 new हाँ. Dino James songs coming out in Yeah. in the next few Very very months. soon. Very Very soon. soon. So Yeah, there yeah. you go. थोड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ हो चुका है यहाँ पे एमजे शो पर. मुझे मालूम भी नहीं था. हमने सी यू नो व्हाट, Hmm. डीनो बताएगा आपको. आई डोंट प्लान दीज कॉन्वर्सेशंस. मुझे ये जो ऑर्गेनिक कॉन्वर्सेशन होता है ना, ये बहुत अच्छा लगता है Right. कि हमें मालूम नहीं, Correct. मुझे तो मालूम नहीं था कि हम कहाँ जाएंगे, और मुझे ये डेफिनेटली मालूम नहीं था कि 3 नए गाने आने वाले हैं. मैंने कहा था कि मैं पूछूंगा व्हाट्स हैपनिंग नेक्स्ट. It could have been absolutely anything, and I'm super excited to know that 3 more songs are coming your way. Yeah. Tell me how excited you are down here in the comments. And listen, अब भी मैं बता रहा हूँ वापस एक बार, subscribe to Dino James, subscribe to Sony Music India, and subscribe to the MJ Show. Hit the bell icon so that whenever a new song comes out from these guys or a new episode of the MJ Show comes up, you guys get a notification and check it out, because this is where you get to know the stories of all your favorite singers, like Dino is telling you right now, the story of his EP, the last couple of songs that he's come out with, and you just heard 3 more songs are coming your way. Dino, अगर कल कॉन्सर्ट होता तुम्हारा, कहीं पे परफॉर्मेंस होता, Hmm. what is Hmm. that one song that you have to do? It's like तुम्हारा होटल कैलिफोर्निया या समर ऑफ 69 कौन सा है कि अरे यार ये गाना किए बिना ब्रायन एडम स्टेज से जा नहीं सकता और ईगल स्टेज से नहीं जा सकते, या एमिनेम के लिए व्हाटएवर हिज बिगेस्ट, चलो रैप गॉड बोले या स्लिम शेडी बोले, दैट्स देयर बिग हिट्स. What's that song for you and for everybody watching right now? I थोड़ा think सा सुना now, दो. if you ask me now, I think definitely Sun. Nice. Definitely Sun. 110% Sun. Chemicals and Sun, actually, to be honest with you. Right. केमिकल और सुन वो 2 गाने हैं क्योंकि एक फ्रेश साउंड है मेरे लिए. एक अंदर एक खुद की डिस्कवरी है. आई वुड लव टू सी कि जब मैं स्टेज पे जाऊंगा लोगों के साथ में, और जो वो केमिकल का जो कोरस बजेगा और वो पूरी Yeah. लाइटिंग होगी, और Yeah. जब सुन आएगा, आप सुन बई बे हूं मैं, सुन बई बे वो जब चलेगा स्टेज पे. So I Right. just wanted to, see, because all those songs already do a lot, Correct. Tandav, I know Bhokali, I know Hancock, I know how they perform, I know the reaction of the audience. So Right. I pretty much know what's going on. Huh. With these 3 songs, to be honest with you, You Feel want Like to Any, see how Sun it will and be. Chemical. Correct. I want to see what Feel Like Any is. A complete, it's a little groovy kind of a vibe when I'm explaining things. I'm saying ki
तो उसमें मुझे वो देखना है, वो ना, वो फिजिकल रिएक्शन, वो फिजिकल टच विथ माय पीपल, वो देखना है मुझे। तो That is आई, awesome. यू नो, आई टॉक दिस अ लॉट टू माय फ्रेंड्स, आई सो वांट टू गो एंड परफॉर्म दीस सॉन्ग्स यार। सो या, पर इनफैक्ट 3, तो नॉट 2। ये तो 3 गाने हो चुके हैं, पर मैं कह रहा हूँ तुम्हारे इस साल के पहले जो गाने रिलीज हुए हैं, योर ओल्डर हुँ, सॉन्ग्स, योर बिग हिट्स, हुँ। व्हाट्स द वन सॉन्ग दैट यू नो पीपल रियली लव, और थोड़ा सा सुना दो ना, लेट्स एंड टुडेस एपिसोड आई विद वन ऑफ लव, योर बिग हिट्स। अभी हाल ही में घर पर आई यूट्यूब की 1 मिलियन की ट्रॉफी, पर पता नहीं क्यों मैं खुश नहीं हूँ, मुझे लगती है वो एक शो पीस। अब भी उस साला ब्रो की है बेसिक चीज़ों की कोशिश, दुकान में चाहिए नोट ही कर घर लाना है बेटे ग्रोसरी। रोज़ मैं करता हूँ भले खुश होने के पोस्ट में, फिर कोसने लगता हूँ सबको मैं अपनी सोच में, ऑफ कोर्स है गाने जोश में, पर कमा नहीं रहा हूँ नोट्स में, इस होप में कि मुझ में भी पड़ेगी रब की रोशनी। हरदम डराए सब थम से जाए, सब इतना बढ़ाए मेरे चेस्ट में, एकदम से हाय फिर मन भराए, पर कुछ भी दिखा नहीं नेक्स्ट रे, कसम से भाई मन जम फरमाए लगे कुछ भी नहीं है साला बस में। मैं नोन गाइस मंजिल दिखाए फिर भी रहता हूँ हमेशा डेस्परेट, यूट्यूब का हाइप कमेंट और लाइक सभी लगता है मुझे एक भ्रम सा। आई डोंट वांट टू लाई, मेरी सेम लाइफ फ्यूचर पे रहती है चिंता, करता हूँ ट्राई बट आई डोंट नो व्हाई, वीडियोस बना रहा हूँ लेकिन चंदा जो नो ना गाय से मेरी नॉर्मल लाइफ मिला नहीं है चांदी का चमचा। दोस्त बता मेरे रोज कैसे करूँ पोस्ट के पड़ा हूँ मैं इंस्टाग्राम में, जब नो बडी नो सब 20 साली सोच बेसिक चीजों के इंतजाम में, नोच खाती सोच दो बाटली रोज पी के सोता हूँ इत्मीनान से, रोज खाली सोच खा के भारी बोझ सो रो के देता हूँ इम्तिहान में, बहुत काली मैंने बहुत ताली पर बहुत खाली मेरी बॉस थाली, मैं तो सोच तारी पर सो सॉरी मुझे बहुत जाली लगे ग्रोथ सारी, बहुत नोट कमाने की सी होप तो नहीं, स्कॉच नहीं तो बेटा वोट का सही, मैंने बहुत सारे मौके गवा दी फोकट की लगती सारी भोग काली, सारा Yeah. हल्ला सारा गुल्ला सारी मस्ती लगे जाली लगे फेक लगे फेक, ये वो काली लोकप्रिय मेरा म्यूजिक है, बड़े लोग के साथ ग्रुप पिक है पर कोई काम के नहीं है, फेक है इंस्टाग्राम में नहीं ब्लू टिक है, सब रियल है या डुप्लीकेट, एमिनेम हूँ या गुच्ची गैंग पर मजबूर हूँ मैं रुचि के, बस आ जाए कासु खुशी के सबके वर्ष के नहीं अड्डे साले सब फेक बड़े गर्व से बीट पर चेस साले कब तेज। Well, ओके that was एक बात रखना, amazing. That was amazing, man. That was absolutely see I'm not actually fantastic. performing a lot of songs repeatedly na, so actually I tend to forget things, नहीं वो उस यार, लूप में नहीं हूँ मैं आजकल। भाई बहुत बहुत याद रखते हो तुम, इतना भी याद रखना, इट्स लाइक समथिंग एल्स, बट दैट वाज फैंटास्टिक। बट लिसन मैन, Yeah. यू नो आई एम ऑलवेज इन योर कॉर्नर, आई थिंक यू बीन डूइंग समथिंग स्पेक्टेकुलर, एंड जब ये 3 नए गाने रिलीज हो जाए वापस आ जाओ, लेट्स टॉक एंड लेट्स टेल योर फैंस 100% मीर, 100%, उन गानों की भी कहानी लोगों तक पहुंचाएंगे, विल टेल, सी बिकॉज पीपल जब 100%। वीडियो देखते हैं ना, तो सिर्फ जो दिखता है उतना ही दिखता है, पर उसके पीछे जो हुँ, जाता है, गाना कैसे बना, उसकी राइट, जो कहानी है, वो लोगों को राइट। सिर्फ वीडियो देख के समझ में नहीं आती है। तो आ जाओ एमजे शो पे वापस, एंड वील टॉक अबाउट 100% द जल्दी मिलते सॉन्ग्स। हैं, 2-3 गाने और रिलीज़ हो रहे हैं, सो वी गोना टॉक अबाउट इट, आई एम गोना दैट टेल यू साउंड्स द गुड। एंटायर प्रोसेस एंड आई आल्सो वांट टू नो द रिएक्शन ऑफ पीपल, व्हाट पीपल आर एक्चुअली टेलिंग यू अबाउट दिस सॉन्ग्स। That sounds great, man. I love the fact that you're standing on your terrace right now. I love the Yeah. nice light in the Yeah, background. yeah, बहुत yeah. That's what I actually come here at times, and actually, you know, it's we have obviously ocean close by, very so cool. that's what I do. I'll just yeah, yeah. So that's what I do. That's where I stand at times. So I just Yeah, tend to go there and stand. Yeah, yeah. So this is the part, you know, you can see the entire so cool, man. entire So cool. Mumbai. Yeah, yeah. भाई So yeah, ये तो एक amazing. ये तो एक अलग नजारा मिल गया एमजे शो के व्यूअर्स के लिए। आई डोंट थिंक दे एवर थॉट दैट दे Yeah, गेट टू सी द ओशन इन द मिडल ऑफ अ yeah, एपिसोड, बट माय ब्रदर, yeah. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद मी Thank टुडे। you, bro. Thank you so much for having me on the show. Meer, always love you, and has a have a I had an amazing, amazing, amazing conversation and time. Thank you, my friend, and I will see you very, very soon. But that's pretty much all the time we have for now, ladies and gentlemen. That is Dino James. My name is Mihir Joshi. This was the MJ Show. I'll see you soon. I'll see you, bro. God bless. Bye. Hey, I'm Mihir Joshi, and I hope you enjoyed that video. If you did, make sure you subscribe to the channel and hit that bell icon so that you get a notification every time a new video goes up. Hit the like button as well. Leave a comment here for my guests and for me, and share it with absolutely everybody. We will really appreciate it. Make it happen.